हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम फर्स्ट पीरियड टेस्ट 2025 के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर है। सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। यूनिट टेस्ट, एमसीक्यूज वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एसएसटी के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं दिखाए तो मैंने यहाँ पे डिटेल में सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सारे सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन ई की, जहाँ पे रिसोर्स बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले देखिए, इंडियन लैंड masses has a central location between the east and the west Asia. First of India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean roads which connect the countries of Europe, it is in the west, and the countries of the Asia provide a strategic location, central location to India. अच्छा देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पैरा ख़त्म नहीं हुआ है और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देख रहे हो, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish core connect with West Asia, Africa and Europe from the eastern coast, with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. Number one question देखिए, पहला क्वेश्चन, India benefits by its strategic location in terrains and Indian Ocean routes. How the protruding Deccan Peninsula helps India. And number three, write two important facts that can be understood when an ocean is named after a country. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime. The monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting to the East General, which would then pass proposals for next taxes. First, the States General was a political party to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of his body. Last time it was done in 1614. On May 5th, 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass the proposal for next taxes. A replacement hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वोटिंग सिस्टम डिड द थर्ड स्टेट प्रपोज इन द स्टेट्स जनरल. How were the grievances and demands of the common people communicated to the assembly? And last question देखिए, what is a States General, when was it last called before Louis 16? ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन एसएसटी के मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।